it's very important कि आप take from the right sources. Of course, that's very subjective, right source क्या है. But what I ideally mean is when you try to study the Quran, कुरान का एक कॉन्टेक्स्ट है पढ़ने का. अगर आप कोई एक वर्स ले रहे हैं और आप उसको पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, and a lot of people who they want to read the Quran, they love the Quran, but they don't know कि कैसे होता है. So I'll say कि don't take it out of context. Don't cherry pick verses and say this is what it means, because when scholars try to understand and do tafsir of the Quran, they see several things. They see when was the verse revealed, how was it revealed, who was it revealed to, ये किस context में किस चीज किस issue को address कर रहा था. ठीक है. उसके बाद Prophet Muhammad ने उसको कैसे explain किया. You cannot understand the Quran if you do not know the Prophet sallallahu alaihi wasallam. You have to study his life. You have to know basic hadith, क्योंकि ऐसे बहुत सारी चीजें जैसे हमें लाइफ में कुछ डिसीजंस लेने होते हैं, काफी टाइम पे हमें नहीं समझ में आता है क्या करें, तो कुछ ऐसी बेसिक हदीस होती हैं जिससे आपको क्लैरिटी आ जाती है. जैसे फॉर एग्जांपल देयर इज दिस वन हदीस दैट इन्नमल अमालु बिन्निया, हर अमल का दारोमदार उसकी नियत पे होता है. दैट चेंजेस अ लॉट ऑफ थिंग्स, क्योंकि स्कॉलर्स जब उसको एक्सप्लेन करने लगते हैं वो उस एक हदीस से 5,000 चीजें एक्सप्लेन करते हैं. सो engage with the Prophet's life a lot. Try to engage with that and try to verify it. Obviously, थोड़ा difference of opinion भी होता है, but try to verify it as much as you can. Because see, what happens is that the Prophet said कि anybody who unintentionally, I don't remember if it's intentionally or unintentionally, if he lies upon me, he should take his seat in hellfire. इसमें क्या हो जाता है, देखिए why is it so severe, इसकी प्रॉफेट मोहम्मद के बारे में झूठ बोलने के बारे में इतनी सिवियर वार्निंग क्यों है. क्योंकि देखिए हम काफी बहुत सारे लोग, हम में से कुछ जज्बाती भी होते हैं, and we dearly love the Prophet sallallahu alaihi wasallam. हम कोई ऐसी बात सुनते हैं, we just hear Prophet sallallahu करते थे and we're quick to jump on it and act upon it. तो इससे क्या हो जाता है, our deen and our perception of deen is based on his ways. So the moment you hear something which is fabricated, it is changing the deen.